पाहि पाहि सम्बन्धाः त्वं वाङ्मय स्वं चिन्मयामानन्दमय स्वं ब्रह्ममयः त्वं जानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमोऽसि सर्वं जगदेदं त्वजायते सर्वं जगदेदं दलमेषते सर्वं जगदेदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारात्मदानि त्वं गुणत्रयादिताः त्वं देहत्रयादितः कालत्रयादितः मूलादादितोदितं त्वं जगते त्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं ब्रह्मा स्वं विष्णुः स्वं रुद्रः स्वमिन्द्रः स्वमग्रे स्वं वायुः स्वं सूर्यः स्वं चतुः स्वं ब्रह्म भूर्भुवः सुरोम् गणादेवचरवर्णादेतदनन्तरमनुस्वारपरतरासुन्दरधारेण रुद्धं मे तव मनुस्वरूपम् गगारपूर्वरूपं मागारो मध्यरूपं मनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नारसन्दारसंगोहितासन्दे सहेशा गणेश विद्या गणगुरुजयनेतिरद्गायत्री चिन्ता गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् दन्तं चतुहस्तं भाषमङ्कुशधारणं रुदं च वर्धन्यस्ते बिभ्राणं सुगन्धुजा रक्तं लम्बोदरपकारणं रक्तपादरक्तगन्धारक्तपुष्पे शुभोजितं भक्तारोकम्पिनं देवं जगत्कारमचितमावेरभूतं च रस्यादो प्रकृते पुरुषात्मा एवं यन्तिनित्यं स यो योगिनो परान् नमो भौराधपतये नमो गणपतये नमो प्रभुपतये नमस्तु लम्बोदराय एकदन्तनाशिने शिवसोदाय श्रीमन्मूर्तये नमो नमः बार बार वंदना हजार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना भैरवों के चरणों में कोटि कोटि वंदना भैरवों के चरणों में कोटि कोटि वंदना जटाटवीगलज्वल प्रवाह पावितस्थले हले लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां मड्डमड्डमड्डमड्डमल्लिनाडवरवयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं बार बार वन्दना हजार बार वन्दना बार बार वन्दना हजार वन्दना भैरवों के चरणों में कोटि कोटि वन्दना काकटाः सभ्रम भ्रमल्लिलिम्पणिरजारि विलोलविजिवल्लरि विराजमानमूर्ध्वरि गद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरगन्धैर्गतिरधिप्रदक्षिणं मम बार बार वन्दना हजार बार वन्दना बार बार वन्दना हजार बार वन्दना भैरव के चरणों में कोटि कोटि वन्दना भैरवों के चरणों में कोटि कोटि वन्दना देवार्चसेवमानपावनाग्र्यङ्गरं व्यालयज्ञसूत्रविदुषेकरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं कालिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे बार बार वन्दना हजार बार वन्दना बार बार वन्दना हजार बार वन्दना भैरवों के चरणों में कोटि कोटि वन्दना भैरवों के चरणों में कोटि कोटि वन्दना भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं वरं नीलकण्ठं सिद्धार्थतालकं त्रिलोचनं कालकालबम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं कालिकापुरानाथकालभैरवं बार वन्दना हजार बार वन्दना बार बार वन्दना हजार बार वन्दना भैरव के चरणों में कोटि कोटि वन्दना भैरव चरणों में कोटि कोटि वन्दना गजानन महाराज की जय। शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानजलो व्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं नन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम् शिवोऽहं शिवं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं आनन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चभयं दधियुतं रम्भापनं पानकं शाखानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो श्रीकुरु शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं छत्रं चामर्योर्युगं च जनकं चादर्शकल्यमलं वीणाभेदिमृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं रणदुस्तुतुरबहुविधाः एतत्समस्तं मया संकल्पेण समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभुः शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं 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 शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहम् आत्मा त्वं गिरिजामतिसहचराः प्राणाशरीरं गृहम् पूजाये विषयोगभोगरचना निदरा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भोदवाराधरम् शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं करजनकृतं वा कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसंहापराधं विहितं वा सर्वमेतक्ष्मस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भुः शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहम् प्रारंभे विनन्दे गुरु गणपते विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमते आराध्य मोरेश्वरा चिन्ता क्लेशदरिद्र दुःखवघे देशान्तरा पार्वे हेरम्बा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवे मंगलमूर्ति प्रसिद्ध आट गणपति या पुण्यभूमि मध्ये कसवा गुपचुपमाति मोती चिमर्या चादर्शना जाऊया सारसभागतळ्यातला गणपती त्याच्या पुढे दशभुजा आठवा श्रीमंत दगडूशेठ गणपती आर्यासी बोलावया मोरया मोरया मिळताने तुझी सेवा करुणाय जाणे अन्याय मारे कोट्यार कोडे मोरेश्वरा बाळ तू घाल पोडे आनंद महाराज के गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरेः अस्तु श्रीर्मंगलानि भवन्तु सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाच्ये नरवे पुरवे प्रेम कृपादे हाच्ये सर्वांगे संधार अडशेंदराचे कंठे रागे माळवणाचे जय देव जय मंगल मूर्ते हो श्री मंगल मूर्ते दर्शन मन स्वर्ण मात्रे मन कामना पूर्ते जय देव जय रत्नाकरिता हरा तुझ गौरे कुमरा चंदनाचे ओटे कुंकुम केशरा हीरे जडिता मुकुटा शोभा तो भरा रुंजुंदे ओ बोरी चन्नी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ते ओ श्री मंगल मूर्ते दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मान कामना पूर्ते जय देव जय लंबोदर पीतांबर प्रेमर वंदना धरणासुंड वक्र तुंडत्रैनैना आश्रमात्साह वट्पाहे सदन्ना संकट से पावाहे निर्वाहे रक्षा में सुरवर गजवदना जय देव जय मंगल मूर्ते हो श्री मंगल मूर्ते दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मान कामना पूर्ते जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो आचा गजमुख को आचा गजमुख को धुंधेर लाल विराजे सुत गौरी हर को सुत गौरी हर को आतलिए गुड़ लड्डू साये सुरर को साही सुरवर को महिम कहे न जाए लागत हूँ पद को जय जी गणराज विद्या सुखदाता विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता आष्टो से ते दासी संकट को भैरे दासी संकट को भैरे विघ्न विनाशक मंगल मोक्त अधिकारे खोटे सूरज प्रकाश ऐसे जब तेरे
ऐसे जब तेरे गंधदल मद मस्तक झूले शशि भी अरे जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता भाव भगत से कोई शरणांगत आवे कोई शरणांगत आवे संतत संपत सब ही भरपूर पावे ऐसो तुम महाराज मोको अति भावे मोको अति भावे गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता कपूरगौरं गावतारं संसारसारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तौ हृदयारविन्दे भवं भवामि तन्नमामि मन्दारमालाञ्जकपालकाय कपालकलाशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय जलेन शिथिलीकरणं देवानाम् अभिवन्दनं गलिङ्गलोटाङ्गलवल्यचरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे अलिङ्गिन अनल्य पूजिन भावे वाणिन मने नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविण त्वमेव सर्वं मम देव देव कायवाचा मनसेन्द्रिये मा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् त्वमेव अन्यं सकलं परस्मै नारायणाय ते समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे ओम महागणानान्वागणपति गुम्मवामहे कविं कवीनामुपवासनवरम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानसुरमन्नोदेवसेदासादनम् ओम श्रीकृष्णं देवं विश्वाक्षं स्वशम्भवम् विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमानिजं विश्वं नारायण गोहरे विश्वमेवेदं पुरुषस्य विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्ममेश्वर घोषाश्वतघोषमज्योतां नारायण महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मन्नारायण नारायण परब्रह्म तत्त्वं नारायण परा नारायण परो ध्यानं नारायण परा यच्च सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अन्तर्बहिः च सर्वं नारायणस्थिता अनन्तमव्यगमे गोसमुद्रे तं विश्वशम्भोवम् पद्मघोषप्रदेकाशधृतिं चाप्यधोमुखाम् अधो निष्ठावितस्यान्तेनाभ्यामुपरदिशते ज्वालमालाकुलम्बादि विश्वस्य यत्र महता सन्ततगोचराभिस्तोलम्बत्याशसन्नेवम् तस्यान्ते सुचिरगो सूक्ष्मं तं सर्वप्रदेशिताम् तस्य मध्ये महानग्नेर्विश्वार्ज विश्वतोमुखा सोग्रभोजन्त्यष्टन्नाम जरक्के तीर्यगोरमदस्यायी रश्मयसस्य सन्तदा सन्दाहपयते स्वहरहम्मापादलमस्तका तस्य मध्ये वन्यशेकान्योर्ध्वा विवस्थिता नीलदो यद्मध्या विथुल्लके ममास्वरा नीवारशुक्तमत्तन्निपीतावाजसुवा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थिता स ब्रह्म स शिवसेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट ओम राजाय प्रसंय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गोर्महे समय कामाहन काम कामाय मय्या कामेश्वरो वै श्रवणो ददातो कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति स्वां राज्यं भोजं स्वराज्यं वै राज्यमार्मेष्टं राज्यं महाराजमयम् समन्तप्रियायि स्यात् सार्वभौमः सर्वशान् दाता प्रार्था पृथ्वे समुद्रपर्यन्ताय राजते
तदप्यश्लोभितो मरुतप्रवेष्टारो मृतस्यावसङ्ग्रहे आविखितस्य कामप्रिये विश्वदेवा सभासत इति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सहस्राक्षाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महादुतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहान् परमेश्वरः ओम रवरस्वा श्री गणेशाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि मंगलम भगवान् शंभुः मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनुहर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति
Machine learning engineering is a popular choice in today's career landscape. But where do you start? From designing a machine learning system to deploying them in a scalable manner, this session dives deep into what skills are needed to becoming a machine learning engineer. Understand how real-world ML projects are built, scaled, and maintained. If ML intrigues you, register now. समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। आप समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. If you belong to a country that carries any weight in the world, then it doesn't matter which capital do you live in. It can be Washington, can be Beijing, definitely it can be New Delhi, most certainly for us and most importantly for us, it can be Moscow, London, Brussels, anywhere. Geopolitics, you will find, is like a T20 game now, because asking rate is and odds are changing every ball, not just every over, every ball, because big heads of state are meeting, they are speaking, and it looks like very often they are shifting the goalposts. Sometimes friends are becoming adversaries, adversaries are becoming friends. It's all happening at a very fast pace. I know by this time you've figured that the main context in which I am talking is the recently concluded Shanghai Cooperation Organization or SCO summit in Tianjin in China, in eastern China. However, there are also echoes from elsewhere, because this was an event at which more than 20 heads of state met. 10 members of Shanghai Cooperation Organization, 2 observers and 14 dialogue partners, right? Top leaders. And most importantly, India, China, Russia. They were there. Pakistan was there as well. But India, China, Russia, the three that matter to us and the three that also matter to most of the rest of the world. That's the reason the first echo, although indirectly so, to this has come from none else than Donald Trump as he's woken up. Because not only is this a T20 match, like a T20 match, it's also like a T20 match that's played across many time zones. That's the reason I said what's been happening right now is keeping people awake in capitals as far apart as Beijing in Washington in terms of time zones. So as Donald Trump woke up today, obviously he and his people have been following what's happening in Tianjin, and obviously what's happening is not making them happy, because they've seen India now, at least for now, looking like finding a new warmth with China. There is no such thing as normalization with China, because all statements that India and China issue, and I will read out the current latest ones to you, they always talk about a possible solution to the border issue on political direction. That's a long shot that's been talked about for a very long time. So fundamental problems between India and China persist. But if India, from being almost like an ally of the Americans in the Quad to balance China in the Indo-Pacific region, from that, if India is now furious with America, smarting under daily insults from people around Donald Trump, even from Donald Trump, remember he called India's economy a dead economy along with Russia's. If India in that situation now goes and talks warmly with Xi Jinping and issues these statements where it says
where it says, and that's a very important line that Prime Minister Narendra Modi has used, and that's been quoted by the ministry, our own Ministry of External Affairs, is read out on what he said. He has said that both countries, each country, that's China or India, should not see the other through the lens of a third country, through a third country relationship. Now, you might immediately think, oh, what this means is that China should not see its relationship with India in terms of what India's relationship with the US is. That Modi saying that is not going to please the Americans, it's going to worry the Americans. But more importantly, in our immediate context, what this also means is our Prime Minister saying that India should not view its relationship with China in terms of China's relationship with the third country. That third country, for heaven's sake, is not North Korea, it is Pakistan. So when you see India showing the willingness to make this kind of shift in its approach to China, then you can understand why the Americans have taken notice of it. So this morning, as we came to work, just after that, I presume that might have been the time when really early risers in America may have come to work, or maybe this was in the works yesterday, since last evening, because this was put out by the US Embassy today. So see this long statement from the US Embassy. This is a long rara statement apropos of nothing. There is no anniversary coming up. There is no Independence Day coming up. There is no visit coming up. This is with reference to nothing. But context we all know. So see this statement from the US Embassy. It's a very warm statement. It says the partnership between the US and India continues to reach new heights at this point. And this is the day when we Indians have woken up listening to one more of those offensive statements from Peter Navarro. This time he has said, look at India, it's a big democracy, but they are standing by while Brahmins are making all the profit from Russian oil. Now, some people have tried to be apologetic on his behalf, saying that he comes from New England, and there is the old Cambridge usage of the rich, of the elite as Boston Brahmins. That's what he means. I don't know. He could have then said Boston Brahmins or whatever. Besides the fact that his understanding of caste is all wrong, because even if he's referring to certain oil tycoons in India, he's got the caste all wrong. The last thing a foreigner should try to do, an American should try to do, unless you are an academic like Paul Brass or somebody, or like Lloyd and Susan Rudolph, really accomplished sociologists or political scientists, you should not mess with the caste business in India. So he said this morning, or what we saw this morning, is that Brahmins are making super profits from this Russian oil. But just after that, we saw this statement from the US Embassy that looks like an effort to pour oil over troubled waters. And what is the statement? The partnership between the US and India continues to reach new heights. It hasn't been reaching so lately. It's been hitting some new depths. It's been exploring some new depths for about 2.5 months now. And then it says, this is a defining relationship of the 21st century. That phrase has been rediscovered. It's not been reinvented. It was there. It's been invented a long time ago. It's been repeated many times, but now it's been rediscovered after about 6 weeks or 8 weeks of freeze. And then it says this. This is